to the mandolin. And it was amazing because for me it was sort of like a resurgence in my life of these two instruments, because the sursingar sounds a lot like the sarod, but it has got a much deeper tone, and I decided to start using that in my music. So I guess, it's really important to actually, as you said, mainstream this music, simply because we ourselves in India are losing touch with our own heritage when it comes to music, our own culture when it comes to music, and music forms that are born in India, especially the ancient forms of music. We are sort of losing touch with it, and it's important to mainstream it. Thank you. रिकी जो बता रहे थे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके हमारी ज़िंदगी से, आपके हमारे बड़े होने से जुड़ी हुई हैं बहुत सी परंपराएं. जब बच्चे जन्म लेते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, तो पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, परंपराएं होती हैं, बच्चों को सूर्य को दिखाया जाता है. और अब जब मैं बात करता हूँ नियोनेटल और पोस्ट नेटल एक्सपर्ट से, वो कहते हैं कि इसमें बड़ी सूझबूझ है, बड़ी अक्ल है. हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परंपराएं जो उस समय के लिए सही रही हों वो हमेशा के लिए सही रहें. वो भी हमें बदलाव लाना होगा, लेकिन उन जड़ों को थाम के चलना. और ख़ासकर जब आजकल बात होती है कुछ खाने की, हम मिलेट्स की बात करते हैं या पेड़ों को बचाने की बात करते हैं, अपनी नदियों की बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट का जिक्र जो हमारे लोकगीतों में बसा हुआ है, हमारे बड़े होने में, हमारे गाँवों में, हमारे त्योहारों में रचा बसा हुआ है, उसकी बात दोबारा जब हम सोशल मीडिया पे रील्स में देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं छूट गया था इन सब बातों का हाथ, और अब फिर से हम उनको थामने चले हैं. मेरे साथ मेहमान हैं ऑनलाइन दाजी, जो एनवायरनमेंट और हार्टफुलनेस के बारे में हमसे कुछ बात करेंगे, और ये भी कि how are we going back to our traditions on the environment and as a way of living, and what is heartfulness? I hope we have our guests online with us. Okay, not to worry. Well, जगत जी, आपका भी ये बड़ा फेवरेट मुद्दा है. जगत जी, स्पैरोज, गौरैया हमारे बचपन का हिस्सा रही हैं, लेकिन वो लुप्त हो गई, गायब हो गई. हम सब बचपन में उनको देखते थे, खेलते थे, उनके इर्द गिर्द हम उनके चित्र बनाते थे, लेकिन वो गायब हो गई. और भारत में कुछ लोग हैं जो अपने जीवन का मिशन बना लेते हैं इन पवित्र कामों को. जगत जी उनमें से एक है, और उसके बारे में बताइए, और फिर उसका जो उससे जुड़ा हुआ जो इकोसिस्टम है एनवायरनमेंट का, और क्यों जड़ों की ओर जाना कैसे ज़रूरी है और क्या हो रहा है, वो बताइए. ये पृथ्वी जो है उसके ऊपर बिलियंस ऑफ टाइप्स के जीव है, जिसमें से हम लोग इंसान भी एक प्रकार का छोटा सा जीव है. हर एक जीव कोई पर्पस लेके और कोई रोल के लिए यहाँ आए हुए हैं. ऊपर वाले ने हमें भी कोई स्पेसिफिक रोल लेके यहाँ भेजा हुआ है, और वो हमें परफॉर्म करना है. उसी को हम कहते हैं कि ये भी अच्छी तरह से ज़िंदगी जिए, अपना जो रोल लेके आए थे वो निभाया. 2008 में जब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि वर्ल्ड ओवर स्पैरोज एक्सटिंक्ट हो रही है, तो बचपन में अपने आसपास बहुत रहती थी, और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थे. और उसके बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा अभ्यास किया, गौर से सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो उसमें से सब पता चला कि भाई ये नेगेटिव न्यूज़ को मैंने पॉजिटिव तरीके से ले जाने के लिए अगर मुहिम छेड़ी, और नेस्ट का जो स्पैरो का स्टडी करके उसको जो लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से वो लुप्त हो रही थी, उसको वापस लाने के लिए काम शुरू किया. और धीरे धीरे ये काम इतना आगे बढ़ा कि इतनी सफलता मिली है कि इसमें अद्भुत काम हो सकता है. और ये हेरिटेज की बात करें हमारी, कि अगर हम नेचर कंजर्वेशन पे काम नहीं करेंगे या उसको साथ में लेके नहीं चलेंगे, तो सभी के लिए जो क्लाइमेट चेंज बोलते हो या ग्लोबल वार्मिंग बोलते हो,
वो एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों को साथ में लेके हमें आगे जाना है, वरना हम पिछड़ जाएंगे, ऑलरेडी लेट है। और मेरा ये कहना है कि मैं अगर अकेला अपने एक आदमी की मेहनत से, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नेस्ट पूरे हिंदुस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहा हूँ, बांट रहा हूँ, मैं सेशंस कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कलेक्ट कर रहा हूँ उसकी स्पैरोस की, जो मैंने दिए हुए नेस्ट में से है सक्सेस स्टोरीज, उसकी पूरी लाइफ के बारे में। और आपको जान के खुशी होगी कि मैं एक अकेला आदमी, मेरे फैमिली की सपोर्ट से, मेरे फ्रेंड्स और कॉरपोरेट्स की सपोर्ट से 2.5 लाख से ज़्यादा मैंने वीडियोस डॉक्यूमेंट की है जो मेरे दिए हुए नेस्ट में है। यानी 2.5 लाख से ज़्यादा चिक्स मेरे नेस्ट में आ सकती है। अभी मेरा ये आपको सजेशन है, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा ये कहना है कि ये बात जब मन की बात में प्रधानमंत्री श्री ने 2017 में ली, उसके बाद में पूरे देश में से और कनाडा से लेके यूएसए से लेके हर जगह से मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं और बर्ड्स कंजर्वेशन और नेचर कंजर्वेशन, ट्री कंजर्वेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सफलता मिलती है। बहुत मामूली सा खर्च है और ये हमारा हेरिटेज था, हमारे संगीत में था, साहित्य में था, हमारे हर रोज के जीवन में था। और अब हम मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर ये सब पीछे छूट गया है, हम 4 दीवार में कैद हो गए। ह्यूमन इज़ द ओनली लिविंग बीइंग विच इज़ वर्किंग फॉर प्रॉफिटियरिंग, अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर लाइफ्स। बट ये इसको अगर आप साथ में लेके चलोगे तो ये बहुत सुनहरा आपके लिए अवसर है और आपको अंदर से बहुत सुकून मिलता है कि उसका जब आप चर्पिंग सुनते हैं और आपके बनाए, आपके दिए हुए घोंसले में अगर 4-6 बच्चे आ गए जो आपका कंट्रीब्यूशन है, तो उसका चर्पिंग सुनोगे तो बहुत मज़ा आती है। और ये अपना स्पेसिफिक रोल लेके आया है, वो हमको बेसिकली समझना है। जब हम छोटे थे तब समझ लीजिए कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग नहीं थे। साइंस बता रहा है कि ये जो पिछले सालों में आया है वो पूरी फूड चेन टूट गई है और इंसेक्ट्स और वो सब जो ये पक्षी घर के अगल बगल के खा जाते थे, अभी वो नहीं है, या तो पेस्टिसाइड इन्फेक्टेड है, उसकी वजह से ये सब मर जाते हैं। और उसकी वजह से जो इंसेक्ट्स है उसके शरीर के अंदर जो वायरसेस स्ट्रॉन्ग हो गए, वो अलग रोग लेके अपने सामने आ जाते हैं और इसके ऊपर कोई जल्दी दवाई की असर भी नहीं होती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के इसका कोई स्पेसिफिक रोल है और ये ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास में पले बड़े हैं, ये फॉरेस्ट के नहीं हैं। तो ये पृथ्वी के हम मालिक नहीं हैं और इसको हमें अच्छी तरह से सभी जीव को न्याय देके सभी को साथ में लेके चलना है। बहुत शुक्रिया। जगत जी जैसे लोग तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं, वो अपने जीवन में अपने अपने तरीके से ये जो छोटी बड़ी साधनाएं करते रहते हैं जिससे हजारों लाखों लोग फायदा पहुंचाते हैं। कई बार जान नहीं जब पाते कि ये कौन सा तपस्वी है जो कहीं पर चिड़ियों को बचा रहा है या नदियों को साफ कर रहा है या पेड़ों को कटने से बचा रहा है। और मुझे लगता है कि हमें आसपास ऐसे साधकों को देखने की, उनके बारे में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने की बहुत आवश्यकता है, बिकॉज आवर हीरोज आर अमंग अस। हमने जो बात की इस समय, आप में से बहुत से लोगों को शायद थोड़ा सा लगा होगा कि ये एकेडमिक सी बातें हैं, लेकिन अगर आप अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, बुजुर्गों से बात करेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे। और आजकल हम जिस वक्त में हैं जहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि children must code at the age of 4 and 5, otherwise their futures are ruined. This is what is being told to us. At that time, I think it's very necessary to remind ourselves that playing with birds, playing with mud, running after goats, this is what shapes us, what shapes our brains, what gives us cognitive thinking, and this is what we need to celebrate. इसी को तो बचाना है। मिट्टी से मेरी बेटी, मेरा जहाँ घर है गांव में, लखनऊ से 1.5 घंटे की दूरी पे,
तो वो मिट्टी से खेलती है, गाय बकरी के साथ खेलती है, उसके दोस्त बगल के खेतों से आके कोई मूली दे जाते हैं, और जो वो सीख रही है इस प्रोसेस में वो कोई किसी भी ऐप के थ्रू वो नहीं सीख सकती, ये मैं जानता हूँ। तो जगत जी जैसे लोग उस शिक्षा व्यवस्था, उस सीखने की परंपरा के भी ध्वजवाहक हैं। They are the flag bearers of that tangible and intangible form of learning that our culture has given us over the centuries, which we have to preserve. So this is not just, ये सिर्फ गौरैया की बात नहीं हो रही है, ये आपकी मेरी बात हो रही है, हमारे बच्चों की बात हो रही है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं मिज़ोरम से, और अगर मन की बात में हमने उनके बारे में सुना नहीं होता तो ऐसा हो सकता है कि हम उनके बारे में नहीं जान पाते। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा रोशन लेना जी से। So would you like to tell us a little bit about, I was talking about going back to basics, going back to roots, and Jagat ji was speaking about the environment, and you have done tremendous work on rivers. Would you like to tell us about that? Thank you, sir. In his 90th episode of Man Ki Baat, our Honorable Prime Minister P. Narendra Modi has highlighted the effort and endeavor to save the dying river of Chittelui, a beautiful and historic rivulet which flows beside Aizawl, the capital city of Mizoram. Today, on behalf of the Save Chittelui Coordination Committee and on my own behalf, first of all, I extend a sincere thanks and gratitude to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for extending his concern, mentioning and endorsing the campaign, the ongoing struggle to save the Chittelui in his Man Ki Baat program. I'm really convinced that the Prime Minister's encouraging words will certainly embolden and inspire the committee, all the partakers in the movement, and each and every stakeholders in all aspects to save the iconic, the historic river. I would like to introduce to you the famous iconic Chittelui. Chittelui means river. So Chitte River. Chittelui is one of the most important, notable, most renowned, and one of the celebrated river of Aizawl. The river is said to derive its name, Chittelui, due to the bland and unsalted water when it collided with a small stream, another stream called Sipui River, at the southern part of Aizawl. As a matter of fact, Chitte means less salt, tam namak, less salt. Chittelui is situated at the eastern part of Aizawl city. The river has its source at the mountain ranges of what we call Bongkon at the northern end of Aizawl city. These beautiful rivers flows beside Aizawl city and joins another river, Tuirial, which is longer and larger than Chitte River. And the entire length of the river from the source till it confluents with Tuirial River is approximately 20 kilometers, which is bounded by patches of forested mountains on the opposing side. Apart from its scenic beauty, it is one of the natural resources which contribute much to the well-being of the city. Colorful wildflowers and large collection of flora and fauna are found in the region. And like many rivers in Mizoram, Chittelui is a tropical mountain river which is mainly fed by rainfall or rainwater from its catchment area. The Chittelui comprises of several mountain major and important tributaries, around 19 in total. Among these tributaries, some of them are very much prominent and as old as Aizawl city itself, Mirong Lui, Bangla Lui, etc., etc. However, on the other hand, since all the tributaries are flowing right from several localities of Aizawl city, especially the northern part of Aizawl, where large areas of vicinities are spreading. At this moment, it has been unfortunate to see that they are the major polluter of the Chittelui.
And this situation has been among the worst case scenario or a heavy cross to bear for the Safe Chittelui Committee. The river has significant historical values for the Mizo as well. It is notable to say that even the poet of the century, the greatest poet among the Mizo, has composed a song which was shown great honor and admiration for the river. If we look at the aerial photograph of Chittelui as shown in the Google map, we could have a more holistic or comprehensive view of the river. At the left side, we will see the central portion of Aizawl city where several big localities are situated. At the right side, we will see some part of another sizable locality. It is evident that both sides of the river are overcrowded, overpopulated, and immensely congested, full of houses of every size in an unplanned and uncoordinated manner. The entire garbage, waste, and any form of trash from the city is sweeping down into the Chitta River and moreover further into another river, Tuirial, which disturb many farmers and harvesters at the hinterland of the river. The first thing that the committee had encountered at the outset of our venture is about the unregulated dumping of art spoils. Aizawl city is a fast-growing city. New houses construction are sprouting out everywhere, however without unplanned and proper regulation. During those days, Aizawl municipal corporations regulation were not implemented or enforced. So several years, Chittelui has been one of the favorite dumping places for builders and contractors, drivers and laborers. Another thing that we have come upon during the initial period of the movement is about excess garbage and trash. We can say that almost 99% of the trash is coming down from several localities in the city through various tributaries. When the Safe Chittelui movement was formally started in 2017, several initiatives had been taken to tackle this problem. Let me illustrate only 2-3 points. The first thing that we did was creating awareness to the people, educating the masses. Another achievement is the legislation of the Chittelui Prevention and Control of Water Pollution Act and rules. Right. And another thing that I would like to mention is about the plastic road, which is also mentioned by the Honorable Prime Minister. I think these are just very inspiring. This is a very inspiring example and very relevant because in large parts of large parts of our country, rivers are under threat, water bodies are under threat. In villages, ponds are under threat, and I think Rosham Lenaji's pursuit and the pursuit of his colleagues at his group is a lesson. And I don't think we would have come to know about his amazing efforts were it not for Man Ki Baat. So I think that's a power of an idea that gets national recognition and hence becomes inspiration for a lot of other people. So thank you very much. Thank you, sir. And also I feel that the power of content in taking forward ideas is often not recognized as much as it should be. The power of content in changing how people think and how people live. और जो ज़मीनी होने की मैं बात कर रहा हूँ उसमें रेडियो की ताकत है, संगीत की ताकत है और लोगों को समझने समझाने के जो तरीके हैं उन 3 अलग-अलग विधाओं में हमारे 3 पैनलिस्ट्स हैं. I would like to ask Shobna ji, do you feel that this going back to basics or this recognizing of or uncluttering a lot of other things and going back to what is beautiful, eloquent and
just a no-brainer in terms of a lot of way how we think, even things like parenting that we were talking about, or culture, or dance, or performances. How do you see this going back to basics and content? Namaskaram. I'd like to first thank the Prasar Bharati for having invited me here, as well as this platform provided by the Honorable Prime Minister. So, Nileshji, I was just thinking when you were speaking so eloquently about poetry, about nature, it just brings up an imagery, and the point just goes into your subconscious, And I think there's one thing that I would like to say about the particular writing that we have about culture. We were always, so honored to have Western writers write about. It was always like that. So the Western writers used to write about this, our Natya Shastra and all those, the Gita Govindam. So now I think whatever they do, how many ever hours that they spend with us, I don't think they're going to get it's called manvasana. Manvasana is the smell of the earth, and how they can actually put it across like an Indian would. So that is, yeah. So that's one thing. Now the second thing is, see, India has moved so much forwards in terms of every avenue, IT, modernism. But in terms of culture, I think that is our USP, So all countries are like that, whether it is Japan or France. They're known first for their culture. I just like to tell you a little anecdote to show that our strong culture is about the coexistence of our different personalities, different traditions. Once when we were going for the Padma Award, and I was in a bus, and then we had so many, I was just looking proudly, there were so many people, all of them in their traditional costumes. So you had somebody from Arunachal Pradesh, he decided to show up in his costume, and he had his feathers, and then right next to him was a very senior Carnatic vocalist. And then the way they interacted, she just, pushed across the feathers and she said, "Zara, the window khol pandringla." Means, can you, so that spirit, I think, has to be encouraged. It has to be embraced. The other thing is, being an artist myself, you talk about parenting, and let me just also ask Ricky this. When he decided to become a musician, I'm sure his parents were not very, very happy. No, see? So, so it's just that we all have this need that, as he said, at 4 years, you have to get a green card and you have to achieve. But artists like us, I think we're very, very unique. We're very, very different people. We're just keyed in so differently. And I think that we have to be nourished. So that's what I do. And in terms of culture, for us, the Indian philosophy, the Indian festivals, we're all the time celebrating, birthdays of our gods. We're all the time going on streets. We're just waiting. We're waiting to do the dole. We're waiting to throw color. So I think that's a very traditional way of reducing our angst. Right. And that's also why we have such a peaceful philosophy of just to let it be. So this is another thing that I would like to put forth. And now, when we talk about how do you inculcate the next generation? So parents, after a point, suddenly decide that academics is too much, and they say, chalo, we have to get our children more Indian. So at that time, they give them so many options. They say, chalo, go on the guitar, the drums. And the child is sitting here and saying what he has to choose. So sometimes, and most of the times, the child goes to learning piano. Because, A.R. Rahman is seen with his great Yamaha. I mean, not to say one is worse than the other. Sure. It's just that the way we've marketed the traditional arts, So why doesn't the child choose to play the chenda or choose to play the edakya?
So it's the glamour quotient also. So which I'm saying it in a positive way. So when the child is there waiting, so I think we do need a young dynamic team of marketing personnel that would not do it like a charity or something like that, but just go out and see how they can market these traditional instruments, the traditional dancing, and of course, needless to say that all of these sensibilities, the aesthetics, have to be cultivated at the basic school level. So when you, I'm just putting everything in a nutshell. Sorry, I'm just. No, that's what it is. That's what it is. Okay. Yeah. Okay. And Our music is not insulated, and I think that is something that needs to really go through, that it is part of our way of living, it's part of our culture which we imbibe. And sorry, go ahead. Right. So I was just speaking about aesthetics. I was going to the Tanjavur temple. It's called the Tanjavur Periya Kovil. It's so beautifully done with the sculptures, but unfortunately, a lot of these sculptures have been vandalized, right? So they don't know that they're vandalizing it. They put kumkumam, they put the vermilion, and I've had people asking me from the ASI to help out, to speak about this. So once they keep doing it, then all of this actually, it disappears. It is no more there for any kind of academic study, and it loses its beauty and its value also. So I think that also has to be taught about this vandalizing. I saw the frescoes in the Tanjavur temple, and the frescoes are really high. I don't know how someone just goes up there. It's all vegetable dye. Somebody has managed to go there and scrape their present BFF's name there. Oh man. Yeah. Sujata Heart Vijaya, or so whatever, Vijay. The operative word. Right? That's amazing. So, I think, yes, I think it has to be inculcated at the school level. And I'll leave it to you. Thank you. Thank you. हम एक ऐसे दौर में हैं जब एक ज़मीनी कलाकार को आप तक, मुझ तक, हमारे फ़ोन स्क्रीन्स तक आने के लिए बचपन का प्यार या काचा बादाम करना होता है. कहीं ना कहीं हर ज़मीनी कलाकार को, लोक कलाकार को आपकी सुविधा, आपका फ़ोन, आपकी रील, आपके 15 सेकंड की जो मोहलत आपने उसको दी है, उसमें फिट होना पड़ता है, उसमें झांकना पड़ता है और छोटा सा कुछ ऐसा कर देना पड़ता है कि आप थोड़ा सा उसको देख लें. विकृत करना पड़ता है. A grassroots artist has to, in some ways, caricature themselves often to be part of your phone screen, to become part of your algorithm. And when we are doing this, we are going farther and farther away from the rawness, the intimacy, the beauty of what we have as a culture, as a nation. And what we have is not something that is on the fringes, कि जब लोग देश बनाने और बचाने और बढ़ाने की बात कर लें तो चलो थोड़ा सा कलाकारों को भी मोहलत दे दो. कलाकार वो फ्रिल्स नहीं है, वो साइड शो नहीं है. कलाकार आपकी आत्मा में है, कला आपकी आत्मा में है. गौरैया को बचाने पे अगर लोकगीत लिखे गए, अगर बरगद के इर्द गिर्द लोकगीत लिखे गए, अगर बरगद की पूजा करने की परंपराएं बनाई गईं, तो शायद इसीलिए बरगद बहुत से बच पाए. ये हम नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं. ये हॉल जो सुबह खचाखच भरा था और आज लगभग खाली है, वो लोग जो अपने घर चले गए, शायद उनके लिए ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं रह गई. और शायद हम जो कम्युनिकेटर्स हैं, ये हमारा दोष है, क्योंकि हम इन बातों का महत्व उनको नहीं समझा पाए. हम नहीं बता पाए उनको कि ये जो परंपराएं हैं, ये जो मोटा अनाज जो खाते हो, जिसको जब
पश्चिमी दुनिया जब सुपर फूड का लेबल लगा देगी तो दौड़ के जाओगे सुपरमार्केट में उसको खरीदने तुम, वरना सहजन आपके गांव गांव में उगेगा और आप उसकी कोई कदर नहीं करोगे, आप मोरिंगा की कदर नहीं करोगे। यही तो परंपरा है हमारी। मिलेट्स तो खाते थे हम, और आज मिलेट्स सुपर फूड बन गया, तो अब सब अपना इंस्टाग्राम पे सुबह सुबह कटोरी में मिलेट्स डाल के और एक चम्मच लगा के और लाइट लगा के फोटो डालते हो भैया। उसी में तो वापस जाना है, वहीं से तो आए हैं। लेकिन हमारा दोष है, हम कम्युनिकेटर्स का, कि हम नहीं बता पाए आपको। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, हम प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो बहुत मजबूत है, जो आपको बता रहे हैं कि बच्चों को चीनी खिलाओ, चीनी खिलाओ, चीनी खिलाओ, जो बता रहे हैं कि ये अनहेल्दी फूड दो, ये ग्लैमरस है। तो ये जो लोग घर चले गए, जिन्होंने शायद उन संदेशों का, उन नदियों को बचाने का, मिजोरम की जो शायद उत्तर प्रदेश की नदियां भी हों और शायद तमिलनाडु की कोई भी नदी हो और तालाब हो, उस गौरैया को बचाने का जो देश में कहीं भी हो सकती, वो शायद संदेश का महत्व तो नहीं समझ पाए। यह हमारा दोष है, यह हमें निभाना होगा। मैं से पूछना चाहूंगा, एज अ कंटेंट क्रिएटर, डू यू over the years do you see this trend of holding on to what we have and what is purely Indian in a very beautiful sense? Do you see this going back in terms of content? पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए तालियां हो जाए. Come on everybody, come on. This is the energy of young India. Thank you Nilesh bhai. Thank you to the panelists. 1994 में एक 14 साल का लड़का था जिसको माता पिता पुष्की बुलाया करते थे और लोग बोलते थे सिट के, जो आज सिद्धार्थ कन्नन यहां पे है. जब मैं रेडियो पर आया था मुझे बोला गया था, सिद्धार्थ ये रहे हॉलीवुड के सीडीज, जो आज पेन ड्राइव्स आप कहते हो, जो भी कहते हो, और सुनो बैठ के. तो पहले रेडियो शो से पहले मैंने सुने ये हॉलीवुड शोज. उन्होंने बोला दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. मैं मर गया यार, मैं पसीने लथपथ हो गए क्योंकि मैं लखनऊ से आया था, बंबई में 2 दिन हुए थे, गलती से रेडियो में डाल दिया था. 14 साल के लड़के बोला कॉलेज शो है. तो मैंने मम्मी पापा अम्मा पापा से पूछा कि ये दिस इज व्हाट वी नीड टू डू क्या है. मेरे डैड ने कहा देखो तू हारा तो हारा, तेरे 2 रोटी खिला दूंगा घर में, तू मजे कर. एंड आई एक्चुअली केम ऑन रेडियो एंड आई सेड, मेरी माँ ने मुझे एक टिफिन बॉक्स दिया था जिसमें रसम और सांबार था राइस के साथ. जब गाने बज रहे थे तो मैं खा रहा था और एक्चुअली उसके बारे में बात कर रहा था. और इमीडिएटली लैंडलाइन कॉल्स आने लगे कि सिद्धार्थ तुम क्या खा रहे हो, रसम सांबार बताओ और उसके बारे में. और मैं बोलने लगा. एंड दैट बिकेम द हाईएस्ट रेटेड शो इन 1994 ऑन FM रेडियो. क्योंकि मैंने वो हॉलीवुड के जो शोज सुने थे, मैं परेशान हो गया और मैं भूल गया उसके बारे में. What I like about our honorable Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी, मन की बात में वो प्रेरित करते हैं, कल्चर के बारे में बात करते हैं, पर रेडियो की ताकत एक है कि जब लोग जो बोलता है रेडियो पर, जो बोलते हैं रेडियो पर, वो बात करते जैसे आपके दोस्त हैं. तो जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं रेडियो पर, लगता है कि हमारा बड़ा भाई बात कर रहे हैं, दोस्त बात कर रहा है, तो उनकी बातें और गहराई से समझ आती है. फिर रेडियो से मैं गया YouTube पर सर, और YouTube पर सर्टेन स्टार्स ट्रेंड मार रहे थे. और फिर मैंने जमीन से जुड़े लोगों को इंटरव्यू करना शुरू किया, क्योंकि मैंने इतने ट्रेंडिंग स्टार्स को इंटरव्यू कर दिया कि मैं खुद बोर होने लगा. मैंने कहा यार कितना ट्रेंडिंग करूंगा, मैं थक रहा हूं. तो मैं जमीन से जुड़े लोगों से बात करने लगा. और YouTube मेरा खुद का प्लेटफॉर्म था सर, जैसे आपका खुद का प्लेटफॉर्म है. रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. पता चला पहले 2 दिन में इंटरव्यू नहीं निकला. मैंने कहा ये लो वापस चले गए, व्हाट्स अप ब्रदर, व्हाट्स गोइंग ऑन, यही शुरू करना पड़ेगा यार. फिर तोते निकलने लगे, पसीने आने लगे, 4 हैंकी लगाया. पर 6-7 दिन बाद वो जमीन से जुड़े हुए स्टोरीज जो कल्चर पर आधारित थे,
हमारे कंट्री के कोने कोने पर जो स्ट्रगलिंग स्टोरीज थी वो निकलने लगी और कमेंट्स में था, सिद्धार्थ भाई आपके यूट्यूब पे ऐसे लोगों को सुनना है। एंड वुड यू बिलीव टुडे कंजम्पशन पैटर्न पर जमीन से जुड़े लोग जो कल्चर से करीब है उनकी कहानियां ज्यादा निकलती है दोस्तों। फिर एक बहुत बड़ा कमेंट था सर, आप लोगों ने सुना होगा, अवेंजर्स आ गया हॉलीवुड में, वी नीड अवेंजर्स टू बी मेड इन इंडिया। एक सिंपल से इंसान थे, हैदराबाद से आए, राजमौली सर, जिन्होंने हमारी कहानियां बनाई, राइज फॉल अचीवमेंट्स, जो बरसों से हमारे साथ है, सदियों से हमारे साथ है, और अब हॉलीवुड बोल रहा है वी वांट टू मेक बाहुबली। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर मैं गलती से फॉरेन चला गया सर, गलती से, बहुत सेव किया मेहनत करने के बाद। तो मैं एक जगह गया, इबीता क्या कहते हैं मुझे समझ नहीं है सर, गुस्ताखी माफ फॉर द प्रोनाउंसिएशन। वहां पे सारे लोग, इंडियंस भी, अंग्रेजी म्यूजिक पे डांस कर रहे थे, ये कर रहे थे। एक सरदार पाजी मेरे बगल में थे और उन्होंने कहा यार काश हमारा बल्ले बल्ले यहां बजता। और दिल से बोलूं, मैं निकला वहां से सर, मैंने फोन में चलाया हमारा पंजाबी म्यूजिक। वुड यू बिलीव स्पेनिश लोग थे मेरे इर्द गिर्द और मैंने खुद की पार्टी बना दी सर, वो लोग सब डांस करने लगे। कुछ ही हफ्ते पहले या कुछ ही दिन पहले कोचेला करके एक फेस्टिवल है जहां पे सिर्फ अंग्रेजी म्यूजिक बजता है और लोग अंग्रेजी म्यूजिक सुनने आते हैं। दिलजीत दोसांझ पाजी आए और पंजाबी म्यूजिक गाने लगे और बोले गुस्ताखी माफ, मुझे अंग्रेजी इतनी नहीं आती है पर मैं अपनी भाषा में बात करूंगा, और वो ट्रेंडिंग स्टार बन गए दोस्तों। ट्रेंड कौन बनाता है? जब आप और मैं अपने सभ्यता पे, अपनी कल्चर पर गर्व महसूस करें, और ये मूवमेंट मैं इस वक्त देख रहा हूं। आरआरआर, कांतारा, क्यों फिल्में चल रही हैं? इवन इंटरव्यूज के दौरान लोग सुनना चाहते हैं इनकी कहानियां कि गांव में क्या होता है, गांव के लोगों के साथ क्या होता है। इस वक्त आप लोग हमारे साथ हैं क्योंकि आप लोग बोलते हो हमसे कि हमें अपने लोगों की कहानियां सुननी है। एंड दैट्स व्हाई आरआरआर, रिकी केज, कांतारा आर ऑस्कर विनर्स, बिकॉज इट इज आवर स्टोरी, आवर लाइव्स एंड आवर जर्नी। मैं घर में, मेरी 7 साल की बेटी अदीरा और 4 साल की बेटी साइशा है, बड़े नटखट है, और मैं ऑफ लेट बहुत क्लासिकल म्यूजिक सुनने लगा हूं। एक चीज है अलेक्सा, बोलते अलेक्सा बजाओ, बजता है। आज सुबह 8:30 बजे मैं बड़ा खुश था नीलेश भाई, मेरी बेटी ने फोन किया, अप्पा कैन यू प्लीज गेट मी अ मृदंगम। मैंने कहा आई लव यू अधीरा, एंड आई गॉट सो इमोशनल। और मैंने अपनी अम्मा को फोन किया, मैंने कहा अम्मा जब मैं 8 साल का था आपने मुझे 2 डंडे मार के मृदंगम सिखाया, आज मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं बोला, सामने से फोन करके बोल रही अप्पा प्लीज आई वांट टू लर्न मृदंगम। ये क्यों हुआ? हम लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, दुनिया को भले ही भाषण दे कि ये करो वो करो, पर घर से भी तो शुरू होना चाहिए। और आज क्योंकि हम लोग क्लासिकल म्यूजिक बजाते हैं, थैंकफुली मेरी बेटी मृदंगम सीख रही है और गर्व से सीख रही है। सो यस, India wants to hear the India story. The world wants to hear the India story. You and me want to hear the India story. Ladies and gentlemen, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म हूं, मुझे शक्ति मिल गई कि अपने जैसे लोगों को मैं इंटरव्यू करूं। जब कोई बॉस मुझे ये नहीं कहता कि ये ट्रेंड कर रहा है, वो ट्रेंड कर रहा है, और आज आपकी वजह से मैं ट्रेंड कर रहा हूं क्योंकि लोगों के अंदर ताकत है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। नो एब्सोल्युटली, दिस ये जो अगेन मेन स्ट्रीमिंग कह रहा हूँ आयरॉनिकल है, बिकॉज मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग मेन स्ट्रीम which is us, which is how we live, what we eat, the songs we celebrate, all of that. और एक व्यक्ति है हमारे बीच जिसके पास इस सब का वेंटेज है, जो इन सब को देख रही हैं और समझ रही हैं और हमको समझा रही हैं, और मैं बड़ा मुरीद हूँ उनका। पलकी शर्मा, आप इससे जो ग्रो करती है बात, इन्होंने
एक सॉफ्ट पावर की बात की, कुचला की बात की, रिकी ने अपना जिक्र किया, उसको कैसे देखती हैं? Things Indian as a soft power. Thank you. First of all, congratulations to the organizers and 100 episodes of an initiative which I think is truly unique because across the world, policymakers tend to focus on the big picture. And here is an initiative that truly celebrates the cogs in the wheel that is shaping the India story. So it's amazing. We talk about culture and culture as a currency for soft power. And while we may not see it as spelled out as policy, I think for India, for the Indian civilization and for independent India, our story was shaped through our culture. In 1947, when India became an independent country, we were not an economic power. We were not a military power. But we were a civilizational force. We were a moral force. We were a country that did not take up arms and yet defeated one of the biggest military powers of that time, that is Britain, and forced them to leave. And that is the power that helped propel India on the world stage. That is what gave us confidence. We were armed with maybe not material things, but the tolerance of Hinduism, the pacificism of Buddhism, the strength of spirituality, and the world recognized this. And we spoke up for other countries who'd been through colonial times, who'd suffered. And that is what Indian culture gave us. That is how it shaped our policy, our politics, and our understanding of the world and our relationship with the world. In the years since, we have moved on. We have sent rockets to space. आज ही की headlines हैं. जापान ने एक rocket शायद चांद पे उतारने की कोशिश की, वो चला नहीं. स्वीडन ने एक रॉकेट लॉन्च किया, वो नॉर्वे में गिर गया, वो आपस में बहस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया. The world tends to see India through its cultural lens and tends to see India as an exotic land. Unfortunately, they see us, or a lot of them see us, as an exotic basket case, as the land of snake charmers, not the land of pioneers in mathematics and medical science, not the land of epics like Mahabharata and Ramayana and many other literary masterpieces, not the land of architectural marvels that Shobnaji talked about, or dance and music. Today we are also the land of technology. We are the land of a huge talent pool that the world dips into. We are a pharmacy to the world. And whether we realize it or not, and yes, a lot more can be done to appreciate our culture, and initiatives like these are welcome. I think our culture, our sensibility is very much a part of who we are as individuals, and we carry it. We may not know it, but it's there with us. When you talk about your daughter growing up in a village, I grew up in a village, my children are not, but through me they learn to value things that are not there on the apps. So we give some of it forward, and what we create then is the culture that we have today. I think India is a success story because we have accepted from the world and we have given to the world without being rigid about what is right and what is wrong. We have been an open society, and that is why our culture has flourished. As I sit with this panel of very accomplished people, I feel that whatever little I'm doing in terms of storytelling, you're right, that in this day and age, even though we've just come out of a pandemic, what is viral is what works. What is trending is what works. But we are the ones who make things trend. So it will be my effort going forward to try and highlight a little more of our cultural achievements and cultural richness. But communication is a two-way street. And I think when we have conversations like these, we encourage
more people to truly appreciate what we have as a country, as a people, and take it forward. Thank you. As always, words of wisdom and thank you. और चलते चलते मुझे वो बात याद आ रही है जो मैं आजकल रोज़ अपने रेडियो शो पर कहता हूँ कि हमें अक्सर आगे बढ़ने के लिए अपनी जड़ों की ओर वापस जाना पड़ता है. मेरी एक कॉलेज की दोस्त ने मुझे एक बार बहुत पहले कहा था, sometimes we have to go back to where it all began. And I think that's what this conversation has been about. That's what this day is about. That's what Man Ki Baat is about in many forms. Going back to those beautiful and powerful ideas and people who bear those ideas and live those ideas so that we may live better, we may live our lives healthier, in a more mindful manner, in a more giving manner, and just become better human beings. Thank you so much, panel, and thank you so much, audience. Thank you so much, Nilesh ji, and our power-packed panel. I'm going to quickly request Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Vikram Sahai ji, to kindly come on the stage so that we felicitate our power-packed, star-studded panel of distinguished guests. Ladies and gentlemen, a huge round of applause, please, as a mark of our gratitude and thank you, Dil Se, for being part of this National Conclave Man Ki Baat at 100, proudly curated by Information and Broadcasting Ministry as well as Prasar Bharati. Vikram Sahai, Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting. R.J. Kannan, thank you. Bahut bahut dhanyawad. Shobna ji, बहुत बहुत धन्यवाद. Much celebrated Shobna Chandra Kumar. Ladies and gentlemen, please put your hands together also for other distinguished panelists. Ricky Cage, 3-time Grammy Award winner Ricky Cage and Palki Sharma. Yes, all good things happen like this. Thank you very much. Palki. So now we say thank you, Palki Sharma. Thank you so much for being part of this INB Ministry initiative. Also thanking Jagat Kinkhabala, Man Ki Baat mention, and also with that, let me quickly, huge round of applause for Rochi Malina from Mizoram for Man Ki Baat, special mention by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in Man Ki Baat, one of the episodes of Man Ki Baat. तालियां तो बजनी चाहिए, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, प्लीज. एंड नीलेश मिश्रा, एज ऑलवेज आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं हम सब. नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद. And now, ladies and gentlemen, we break for lunch, a quick luncheon, and I would request all of you to reassemble. हम सेम प्लेनरी हॉल में 2:10 पे मिलेंगे. 2:15 तक आप प्लीज अंदर आ जाइएगा. हमारा अगला पैनल तैयार है और अगला पैनल इससे भी बेहतर और शानदार और धुआंधार पैनल है. मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी, वो